Good afternoon, students. So our topic is bouncing of check. Bouncing of check or dishonor of check is the last topic of this unit. Now, bouncing of check is a situation where a check cannot be further processed because it has some sort of defect in it, and it is also considered as dishonor of check. It is also called as dishonor of check. It comes under section 138 to 142 of the Negotiable Instrument Act, and a check may be bounced because of many reasons. It could be spelling error, overwriting, mismatch in signature, insufficient balance in the account, disparity in the amount written in figures and in words, closed bank account, mistakes in dates. Many reasons are there which leads to bouncing of check or dishonor of check. Okay? So, but there are some sort of penalties which are associated with it, and the penalty is if the amount on it or that is paid by the banker is due to insufficient of funds. Say for example, if someone has written like there is a spelling mistake in the check, or the dates have been written mistake, there is a mistake in writing the date, or the signature is mismatching, or it is a closed bank account, then in all these cases there is no punishment or penalty associated. But in case of insufficient funds in the account, it leads to punishment as well as penalty. Now, what sort of punishment and penalties are associated with it? If the amount on it is not paid by the banker due to insufficiency of fund in the drawer's account, it could be penalized. And this offence is punishable with imprisonment of 1 year or a fine, or both extending to more than a year or up to a maximum of 2 years with a fine of twice the amount of the check. Now make one thing clear. In case of spelling errors, mistakes in dates, overwriting, signature mismatch, closed bank account, disparity in the amount written in figure and words, no penalty or punishment is associated. But in case of insufficient funds in the account, the penalty could be a fine which is twice the amount of the check, or an imprisonment of 1 year or 2 year. 2 साल तक का जेल, और जितना अमाउंट चेक में है उसका डबल अमाउंट पे करने का पेनल्टी. Now, therefore, when a person draws a check, he should keep sufficient amounts for clearing the check to avoid being penalized. Now, this statement is clear. इसी वजह से जो इंसान चेक को ड्रॉ करता है उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना ज़रूरी है ताकि वो इस पेनल्टी को अवॉइड कर सके. इफ़ अ पर्सन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, ही विल बी लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली. क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो एक्ट है ना, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. इसको हम किसी भी तरीके से मतलब लूप होल दिखा के कि नहीं ये था, वो प्रॉब्लम था, ये नहीं कर सकते. क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. इसकी वजह से जो अगर ऐसा इंसफिशिएंट फंड का प्रॉब्लम होता है तो पेनल्टी पे करना, मतलब पेनल्टी पे करना ही पड़ेगा. However, if the drawer can prove that he had not committed the offence knowingly and he has tried in every possible way to inconvenience the payee, then he will not be liable. To summarize, the following holds good if a person is found guilty of dishonoring a check. So, the thing is that कि समराइज़ करके ये बोला गया है कि अगर वो जिनके अकाउंट में बैलेंस उतना नहीं था, पर्याप्त बैलेंस नहीं था, अगर वो खुद से ये चीज़ प्रूव कर सके कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो पे को बोले कि उनको थोड़ा टाइम दे, या फिर अभी बैंक में वो चेक डिपॉजिट ना करे, या जो भी रीज़न है, वट एवर वैलिड रीज़न इफ़ ही और शी कैन पुट अक्रॉस, एंड वो ये बोल सके दैट ही इज़ नॉट गिल्टी अबाउट इट, देन ओनली सो अगर वो प्रूव कर देते हैं कि वो लायबल नहीं है और उन्होंने बहुत कोशिश की टू प्रूव हिमसेल्फ
and to convince the payee, so that he doesn't deposit the check in the bank, then वो अपने आप को अगर वो दिखा दे कि वो गिल्टी नहीं है तो शायद उनका पेनल्टी नहीं लगेगा. बट दिस केस इज़ नॉट दैट मच ऑलवेज इन फेवर ऑफ ड्रॉयर, बिकॉज इससे क्या होता है देखो कि फिर कोई भी आके ये करेगा ना, तो इसलिए ये जो सिचुएशन है ये हमेशा इसमें गिल्टी वही होते हैं जिनके अकाउंट में बैलेंस नहीं रहता. सो मॉरल द ओवरऑल टू समराइज आई वुड लाइक टू से दैट कि अगर किसी के बैलेंस बैंक अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है, नाउ इन दैट केस द पर्सन इज़ लायबल टू गेट पनिश्ड एंड पेनलाइज्ड.